तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास है रोलैंड का एक्सप्रेस 30 सिंथेसाइज़र। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखना। और ये वो शॉप है जहाँ से हम लोगों ने ये कीबोर्ड लिया है, शालू म्यूजिक करके है CST में। और उन्होंने हमें ये बैग भी दिया है उसके साथ, ये एक्सप्रेस 30 के साथ। इसमें इसका बैग है, आप देख सकते हैं इसका बैग, ये पूरा उसका बैग दिया है। अब हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक्सप्रेस 30। देख सकते हैं ये कीबोर्ड है इसके अंदर। अभी हमें ये सब निकालना है। और ये बॉक्स देख सकते हैं आप, इसका पावर एडाप्टर है। इसमें हमारा कीबोर्ड, इसमें आप देख सकते हैं यूज़र मैनुअल है। और अभी हम लोग कीबोर्ड को देखेंगे आगे। यहाँ पर पिच बैंड दिया है, यहाँ पर इसका मास्टर वॉल्यूम है। ये अभी मैंने कीबोर्ड ऑन किया है।